गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। 11 बज चुके हैं और बिल्कुल सही समय पे हमेशा की तरह हम आज का ये सेशन शुरू कर रहे हैं। आज का ये सेशन खास सेशन है क्योंकि हमारे साथ एक खास व्यक्ति जुड़ चुके हैं जो कि ऐसी जगह से है जहां पे जाने की सबकी इच्छा होती है और वो जगह है गोवा। गोवा सभी लोग जाना चाहते हैं और ये ऐसे व्यक्ति है जो गोवा में रहते हैं। He is a chartered accountant and he is dealing with SME and MSME businesses continuously, focused exclusively on MSME and SME businesses. तो आज के हमारे फैकल्टी और आज के सेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। Faculty name is Yogesh Kulkarni. He is a chartered accountant. After serving 23 years with large MNCs in India and abroad on the senior most coveted positions of CFO and controller, he has started his entrepreneur journey recently by forming a company named as Global Financial Professional Services Private Limited. Having corporate office in Goa and clients in Goa and Maharashtra, in his previous career with corporates across different industry segments, his role involved balancing responsibility of stewardship with business partnership by acting as an integrator and navigator for driving revenue and OP involvements through risk mitigation, framing robust controls, and executing benchmark accounting and reporting compliance related processes. So basically, he is concerned, he is connected with business processes. हमारे बिजनेस में अलग अलग टाइप की जो प्रोसेसेस होती है वो प्रोसेसेस किस तरह से हम स्मूथ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में हमारा आज का ये सेशन है। इनके बारे में और कुछ आपको मैं जानकारी बता दूं। इस एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज comprises of strategy rollout, financial engineering, global scaling up, and PE funding, that is private equity funding, and valuation, budgeting and forecasting, risk mitigation through GRC and SOX, driving financial processes excellence and rolling out performance management system for revenue and OP maximization by connecting operations to finance. मित्रों, इनका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। लगभग 20 साल तक ये देश के बाहर थे, भारत से बाहर थे। रिच एक्सपीरियंस के साथ वापस आए हैं और वापस आने के बाद इन्होंने अपने लेवल पे खुद का कंसल्टिंग बिजनेस शुरू किया है। He loves listening to music, singing, and traveling to explore new places to enjoy nature's serenity. He has strong bond with his family and friends. He is a great motivator and brightens up lives of the people around him. His mission is to help and support individuals and organizations in achieving professional excellence in integrated global finance systems. So, organization में financial excellence is the top most level which every organization must attain. ये एक लेवल है जिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जाने की इच्छा हर किसी की होती है, हर बिजनेस ओनर की होती है। और हमारा ये जो ऑडियंस है, इस ऑडियंस में मैं जानता हूँ मिक्स्ड ऑडियंस हमेशा होता है। ये कुछ बिजनेस ओनर्स होते हैं, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, कुछ अकाउंटेंट्स भी होते हैं। तो हम सारे लोग एक ही कम्युनिटी के लोग हैं और हम सारे लोग मिलके ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे आप बिजनेस ओनर है तो डेफिनेटली आप ही का ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपके क्लाइंट्स का ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर आप एम्प्लॉइज है, अकाउंटेंट्स है, तो आपका ही ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे काम कर रहे हैं आप। तो ये सारे लोग मिलके अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जा सकते हैं। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से मैं हमारे इस इंद्रधनु अकेडमी, इंद्रधनु फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं चाहूंगा कि आप अपना वीडियो स्टार्ट कर दें। गुड मॉर्निंग पंकज जी, अगर आप Yes. वीडियो का एक्सेस कैन यू गिव मी? Yes, आपको अभी तक वीडियो एक्सेस नहीं मिला है क्या? Yes. Just a minute. I am making you co-host. Yes. Yes, sir. Yes. Okay. Good morning, everyone, and thank you for warm words of introduction. पंकज जी, yes, MSME के लिए कुछ करना यानी मेरे हाथ पे रोमांच खड़े होते, because my drive and enter passion is to drive excellence for MSMEs, and that is how this session has been arranged by Pankaj ji. Yes, Indradhanu Academy has been doing great, fantastic job. I recently visited Nagpur
and tried all Sauji stuff, which is very special to Nagpur, and all nice people, very close to heart, connections. And definitely, I'm keen to make some impactful interventions to all of you through the model which we'll be driving, which I'm just going to explain you or take you through in my presentation. Okay. So I'm just trying to share my screen, and once I share the screen, there will be some videos also which may get played. So before the videos are getting played, I'll be requesting you people to tell me in case of any issues. So Pankaj ji, is my screen visible? Yes, please let 100% visible. Okay, no problem. Yeah. Fine. Okay, so I'll just do this, hide the floating panel. Okay, everything is okay, Pankaj ji? Yes, please go ahead. Fine, great. So मित्रों, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत excited हूँ, और the fact that around 175 participants have registered on this day, which is a holiday, and you need to be with more family and friends, but the fact that you all people have joined on this holiday and attending this session has increased a lot of responsibility on me, that I have to make it most effective, which I will try to do. So this whole slide, it talks about driving the finance excellence. What do you mean by finance excellence? Taking the finance to the next height. We need to take the finance as a function to the next level of maturity. That is all about finance excellence. So as you all are aware, anything whenever we talk about finance excellence, business excellence, operational excellence, it is not a process which happens overnight. It is a process which happens, as a part of the journey or a way for a journey. So today we are going to talk how to drive this journey for the corporate and for the chartered accountants for their offices. So the journey has to be in the analogy is crawl, walk, run to fly. So baby ki growth aisi hoti hai. Same way our organization excellence journey also will happen the same way. Crawl, walk, run, and same way is the finance excellence journey. So what does it mean in other way around is that most of the things usually happen in any organization in the reactive way. Once you get over the reactive way, you start thinking the proactive way of doing the things. Once you start get matured in responding on proactive way, you start thinking what is going to be there, how much loss am I going to make, okay, what are the challenges which will come. That all is preventive journey, and then next is the predictive. So this is how the entire model has been designed, and I'll be explaining you about how you can do the same for your organizations. Fine. So Pankaj ji, my request will be that after each slide, I'll be pausing for 5 seconds. And in case if any participant has any questions, they can put in the chat box. I will answer those questions and then I will move to the next slide. Sure, no problem. Yeah, but I will not be able to access the chat box because I don't want to deviate from the screen. Okay, so if you no can problem. Just reading the questions, that will help me. Okay, sure. I am here to read, no problem. Yeah, the whole idea is that I want this to be a totally interactive session, and I don't want it to be one-sided. That's the whole reason. Yes. Okay. Yeah, fine. So सबसे पहले let's understand what all is happening in the finance world, and finance के लोग, उनका जो भी impression है worldwide, बड़े बड़े CEOs है, बहुत सारे multinational companies के, या common public, और government. So top प्रोफेशनल्स ये सभी लोगों को फाइनेंस के बारे में उनका इंप्रेशन क्या है, फाइनेंस एज अ फंक्शन, या फाइनेंस के लोग ये क्या करते हैं. एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ था, एंड दैट सर्वे वाज कंडक्टेड बाय वन कंपनी कॉल्ड एज ब्लैकलाइन. Now Blackline is a very reputed company in and most of the multinational companies, what they do is when they have to do any kind of a certification,
फाइनेंशियल सर्टिफिकेशन, जिसको 302 सर्टिफिकेशन बोलते हैं, अगर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को कुछ सबमिट करना है, या इफ यू हैव टू सर्टिफाई दैट इन्वेंटरी इज राइट, all certifications they take care of. And if something is there on the black line, then shareholders can rely that it's certified on black line, so the financials whatever are produced are 100% correct. So it also talks about certifying each and every balance sheet reconciliation. So that is the tool. And then that company is surveyed, different type of companies, and they have also heavy presence in India, black line. So they surveyed a lot of Indian companies, US companies, and what they did is, post their survey, they have published some result, which I'm just going to show you here. So the survey was all about finance as a function, finance as an operation, how is it helping business, and what is the importance of the finance function. Because most of you must have seen that when it comes to the promotion, the first people who are talked, they are about the sales guys, right? Then next thing, next team which is being talked is the operation, and usually finance comes at the last. That is the general tendency. But last 15 to 20 years, if you have seen in India, there has been a tremendous change. Even the regulatory or the company law board, whatever we are saying, that it has also asked now CFO being responsible along with the director for most of the things. So there has been a paradigm shift. Most of the statement, if something CEO has to say, then what CFO is saying, that is also being mentioned along with the CEO statement. So when the entire survey was done with all the top business leaders across the globe, what has been found is that 60% of the people, they are saying that sound financial practices and systems are most important for well-managed growth. So it is not only what process you are putting for your operations, but if you put more better process for finance, then you can achieve the growth in a well-managed manner. That is what 60% of people have said. What does it mean? That let's say you want to put systems, let's say SAP, Oracle, or any kind of a system, or any kind of an integration with other operating systems, okay, integrated tally, for example. As far as you are able to capture the effect of each and every subsystems into the main system, which is finance, then you are well placed for the growth. That is what 60% people are saying. 31% people, they are saying that they believe that improved efficiency in financial management is the most underrated part of their businesses. So when any business they talk, कुछ improvement करना है, efficiency drive करना है, then they say, oh, I can do the things in the operation faster. Or just 1 minute, I just want to, there is some noise is coming, and I just want to switch it off. Yeah, thanks. Sorry about that. Yeah, then 31% people are saying that financial improved efficiency in financial management is the most underrated part of their business. So what does it mean? If efficiency has to be driven into the organization, then usually it is talked about the sales and operation as a function. The moment you start talking about finance, then it is always coming at the back end. That is what 31% people believe. 43% people say that financial teams can contribute to the growth of a business beyond financial management. Very important statement. फाइनेंस के जो बंदे हैं, जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके पास इतनी पावर है कि वो खाली फाइनेंस फंक्शन के ऊपर का भी सोच सकते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर बिजनेस को ग्रो होना है तो फाइनेंशियल टीम सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? बिकॉज फाइनेंस पीपल आर ब्लेस्ड विद द कमर्शियल एक्यूमन. They understand the language of operations very well. They understand the impact of whatever is happening into the operations very well. So if they decide that they want to link whatever is happening in the operation to the finance, then company will grow much more bigger. It will not talk only financially, it is managed. They will say that
company is structurally managed well. Very, very important statement. 59% describe the person in their business that runs finance as business leader. Again, most important statement. So what they're saying, who you will call it as a business leader? So typically, most of the people, when you ask them, they say that, okay, like a CEO is a business leader, okay, because he has a hang of everything, wherever, whatever is happening. Or some people say that the person who takes the company to the next level, helps in scaling up the revenue, is usually the sales person. So they say that, yeah, sales persons are the business leaders. But when the survey was conducted, and survey was not including finance people or CFOs, 59% people are saying, if you have to talk anybody as a business leader, then those are the people who are driving the finance function. That is why you have seen most of the places now, the roles of the CEOs are being taken over by CFOs. Because it is usually understood that anybody who has a very good commercial acumen for running the business, and he is blessed with that kind of an ability, which is beyond financial management, he can take the business to the next level, to the next height. And that is how you have seen that most of the finance people, they started becoming CEOs, which you have seen the trend in last 10 to 15 years. It was not there before. It was only core operation guys who understand the operations. They were only the CEOs. 52% agree that finance teams can be entrepreneurial in the way they help business grow. So if finance team decide, finance guy decide that I'm not working for this company, I'm rather entrepreneur. Sorry. So if he decides that how the business owner or entrepreneur will run the business, if I apply all those skills of an entrepreneur for doing my function in finance, then the business is going to grow multifold. The moment finance people says that my job starts only when some transaction has happened and it has come to me for recording, that is where my job starts. The moment you say that, business doesn't grow. You are doing the work as a finance guy, no doubt about it, but you are not thinking in the entrepreneurial way. The moment you start thinking, okay, I want to see, by putting the processes, by putting the systems, I want to understand the impact of each and everything in operation. If there is a purchase order, I will put the process in the purchase order itself. So that I establish three-way maker-checker system. So when it is coming to finance, it is just on autopilot mode. The voucher is getting booked. Not much role I am playing. If I'm a finance guy, I will play the role that no PO, no pay. Very simple. That is how I will put the processes. So that at PO stage, if something is getting approved, then there is not much of job to be done in accounts payable. You can even think about that volume, which can be automated also. So this is the importance of most of the people, what they are telling, who are non-finance guys. Now, I will wait for 5 seconds and I want to understand whatever comments, if somebody is agreeing, not agreeing, has different views, please put it, or your questions, all things you please put it in the chat window. Pankaj sir will help me in reading those and I will answer those. I think currently our audience is in the mood of listening. Fine. We'll go to yes. the next slide. So you may please go ahead. If there are any questions, they will put it into the chat box. Yes. Fine. So I will go to the next slide. Now, this is one slide which talks about how typically the finance person does the book closing, month closing, doing the accounting, recording. So typically what happens is the day one,
most of the accounting related entries, okay, those are being passed for on day one, if at all you have to close the month. So for example, let's say we have to prepare the financials of November 2022. So what will happen is till December 1st, we will keep passing the basic entries, which is related to bank, cash, some expense voucher booking, accounts payable booking. Then from day 1 to day 7, okay, or 7th day of December, let's say, or assume that one day is Sunday in between or Monday, depending upon the holiday which you follow. So typically what you people do is that you prepare the journal entries. So journal entries are typically passed for all kinds of provisions which you are making. So let's say salary provision journal entry you are making, because maybe you may be disbursing salary on the 7th day of the month, but first day of the month, you will have to pass the journal entry. For all sorts of accrual, like prepaid expenses, you may be classifying it to expense. Then, any kind of a liability, like goods are received, but invoice is not booked. So you want to recognize that as a liability, you will do that. Similarly, stock in transit, all sorts of journal entries you are passing. Then you are actually ensuring that the month end is being closed. So typically there is a month end close checklist which you people will prepare. Month end close checklist will have typically all the items, which is like last invoice, last receipt, then search for unrecorded liability carried out, any kind of exposure which is not, which you have come across through any kind of a notice. That is where you will identify the impact. So you will prepare a comprehensive month end close checklist to ensure that when you are closing the month, November month, you are not missing out anything when you are going to prepare the balance sheet and profit and loss account. So preparing balance sheet and profit and loss account is also part of this. Then probably you will get into the accounts reconciliation. So typically you will do bank reconciliations. Some mature organizations, they follow the reconciliation of even sub ledger to general ledger, like accounts is reconciled with the AR aging, AR control account is reconciled with AR aging, AP control account is reconciled with the AP aging, then fixed asset GL code, they are reconciled with the fixed asset registers. So all those things are being put by the finance guys typically. And 7th work day, they are saying that, yes, I mean, we have closed the financial month. November month हमने close कर दिया है और 7 दिसंबर को फाइनेंस के लोग फाइनेंशियल्स बना के रखते हैं. So what happens is post 7th, then they want to also review before it is being presented to the management. They will present key, okay, this was the profit of the last month. This is the analysis of the profit. EBITDA has gone up, or net working capital in terms of days has gone up, and maybe in cash flow, this much cash we have generated from operating activity, this much cash we have generated from financing activity. Then they will do some kind of a forecasting also, that based on the current results, what is going to happen for the remaining months. So that is what usually finance people do. This is, if it is not being done, then it is actually expected to be done by each and every entrepreneur, and that is a fair expectation, right? Because if we are finance people, we need to tell to the management that how the past month has performed. This is a basic job of finance guy. Then post that, they will prepare the reports. So typically the reports are prepared and published. So the reports include profit and loss account, again MIS manner, not statutory audit way, because statutory audit doesn't give you what is the fixed cost, what is the variable cost. It doesn't give you, certain key ratios which are required by the management. It has just like one consolidated numbers it prepares in statutory, but here you will prepare more management understanding where the numbers. Then you will prepare the spend bridge, that if spend has gone up, why it has gone up, gone down, all those reports you will publish here to the management. So these are the typically activities happening from day 7 to day 14. So practically 14th day, finance people are telling that, yes, we are done now with the reporting. And then they start with the compliance. So certain compliances, maybe TDS is happening in between here, but then they start working on the GST. And then they will be preparing some kind of a compliance report, compliance MIS,
all these activities they are doing usually from 14th day to 21st day. 21st day has a significance for most of the MSMEs because that is the date when GST return last due date is there, and for MSMEs. So most of the people are ready with the returns on 20th of the day, and by 21st they are out. So if you see practically any finance person's world, if you try to peep in, he is talking about last month till 21st of the next month. Now, actually, if you step into the shoes of the management, what they expect? This is what is actually expected by the management. And most of the matured multinational companies where I have worked, most of you might have got an exposure. This is how the things are happening. So what happens in the most of the matured companies? Most of the matured companies who are financially matured in terms of the finance processes and systems, what they do is they do the daily variance analysis. So daily profit is measured versus the target. So they take the target. Let's say 1 lakh rupees is the sale which need to happen on a daily basis. 30 lakh is the sale. What was my sale for the day? How much is the gap? So daily variance analysis is being prepared. And for that purpose, some advanced tools and technology are being used, which I will show you, called as management dashboards in the form of some kind of a visualization, which happens through some of the visualization tools. There are a couple of tools called as Power BI, ClickView is there, Tableau is more popularly known by you. So it is published in the form of a dashboard that this much is the gap today compared to the forecast or compared to the budget. They are expecting that daily reconciliation need to happen. So you can't have a situation of, your AR control account is being mismatched with the AR aging. So the processes are set in such a way that every day by default the reconciliations are happening. Similarly, reconciliations are being reviewed. Journal entries are passed daily. Most of the advanced systems, even Tally also, I'm sure it must be having that. You can pass the journal entries, which are known journal entries, throughout the next 12 months at the beginning of the month. So for example, you have some prepaid expense of 12,000 rupees on some subscription. Why you have to wait for entry to be passed called as expense account debit to prepaid expense account at the end of each month? You can pass those kind of entries at the beginning of the year for rest of the 12 months. Similarly, most of the accruals, whatever you do, those are some kind of a thumb rule. Those also you can pass so that, daily P&L can be prepared. That is the whole objective here, because management expect what is my today's profit, what is my today's situation, how I perform today. That is all possible only when you have this kind of a system. Then transactions are matched. The moment you say transactions are matched, there is a three-way match which happens on a daily basis. If something is not three-way match, let's say your invoice is not matched with the purchase order, or invoice is matched with the purchase order, but GRN is not matched, those all are thrown out. Those transactions, those are not taken only in system, because if you have to prepare the financials on a real-time basis, you need right data inside. Okay, so this is how the daily engine is there, which takes care of all activities in a smooth way. And what usually these people do is they call it as a hard close. Hard close means physically book closing. So they close the period that you cannot pass any entry. Now here typically what happens, the maturity level 1 companies, they close the period on the second work day. So if it is a November, till 2nd December, you can pass the entries. Most matured MNCs, what they do is they do the hard close on the last day of the month itself. So they are telling if it is 30th November, then you cannot pass any entry in November after 1st December. So the processes are so matured, all accruals, everything has been put. Entire data is reviewed,
entire analysis is done. Maturity level 3 speaks. Some of the MNCs, they follow -2 work day. Very, very important. -1 work day, -2 work day. Typically what happens here, 2 days before the month close, the financials are closed. Sales is -2 work day. So 28th is the last day of the sales. 29th day morning, management is presented with the information called as flash results. Because whatever has happened in the 28 days, you can't change anything in the next 2 days. And flash is supposed to be 95 to 98% accurate of the results. And what they say is that first to second, third work day, those are being used for actually talking more about the future, which is called as rolling forecast, because you cannot control what all has happened. So there is something called as 60 to 80 Excel sheets of MIS which is being generated, again, which is auto-generated, and that is being talked about. And then there are a lot of reports which are being sent, and those all reports are happening between second to fifth workday in the form of the key performance indicators. And usually 7th workday, the global consolidation happens and the reports are being published to the Security Exchange Commission. That is how the month close happens, not only for that entity, but happens globally. This is how the continuous accounting model helps. And this is how it is expected that MSMEs need to reach to this maturity level, because it is a valid expectation by any entrepreneur to understand and know what has been happening in my business on daily basis. Now it's a journey. So we are going to discuss how we are going to reach to this kind of a journey on the background of what all has happened. Now I will take the questions from you or comments from you on this journey, and then we'll take it to the next slide. Pankaj? Yes, Yogesh sir, I have a question. Yes, yes, sir. You are talking about -1 or -2. Yes, yes. Is it really possible at MSME or SME level? Yes, yes, sir. How is it possible? Because theoretically it sounds very exciting, but when we don't have well-equipped team of accountants or qualified accountants, very few MSME or SME enterprises are able to employ chartered accountants. Then how is it possible with the existing resources, existing infrastructure? Right, right. So that's a very good question. Thank you, Pankaj sir. First of all, this is a journey. If at all we are to reach, we need to create a mindset that we have to reach there. Now there are multiple ways in which we can make it possible. Certain things, definitely there has to be focus on improvement, and I'm going to show you what next slide how we can reach there. As I said, it's the journey. So if you want to happen overnight, we need to leverage the technology. It's a little more, because that's why I say that it's an engine. The automation engine is going to be the core. In order to reach this stage, at least we need to know what the highest level of maturity. First, we need to understand that. If we are taking one step, if I go back to one of the previous slide, this is what is happening in MSMEs. And I am not sure whether at this level the things are happening. But at least we need to know where we have to reach. So we can start doing very simple things like day 1 to day 7 activity, we can start rushing it. Day 1 to day 5. Day 7 to day 14, we can start rushing it. Day 5 to day 8. Similarly, that regulatory reporting happen on day 8. Why everybody is struggling or preparing the GST return only on the 20th day? Why people are not preparing it, whereas entire data for GST on the first week itself? So if it is a mindset change, if people think that yes, everything is possible, then yes, it is possible. But for that purpose,
there is a need that MSME need to drive it as a financial excellence initiative. They need to focus on automation. They need to put their योगेश सर efforts. एक मिनट, Yes, yes. योगेश सर Yeah. आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है, मुझे भी नहीं आ रही और बाकी लोगों को भी नहीं आ रही है। One minute. हाँ Just 1 minute. I'll just check it. If शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी लोगों को भी नहीं आ रहा है। so I'm just connecting to my other network. Yeah. हाँ, So एक just मिनट check तक सब बराबर था, एक मिनट से आवाज ठीक नहीं आ रही है। Okay, अभी आ रही है आवाज? नहीं, अभी भी ठीक नहीं है। Okay. प्लीज चेक योर इंटरनेट स्पीड। I connected the networks here so that in case of any issues, so there is a fiber. या फिर आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए वापस, या फिर ऑडियो में कुछ मतलब, हाँ एक तो थोड़ा सा इको हो रहा है और दूसरा आवाज टूट रही है, क्रैक हो रही है आवाज। Okay. Proper network. Just see if it works now. Okay, is it clear now? No, yes, it is clear now. Fine. So Geo optic fiber is working better than BSNL optic fiber. हाँ, Okay, fine. तो So एक okay. थोड़ा सा पीछे जाके वापस स्टार्ट कीजिए। Yeah. Okay. So पंकज जी, आपका सवाल था कि जो भी मैंने बताया है ये MSME के लिए खाली ड्रीम है, is it really going to be possible? हाँ, जो भी MSME, this was your question, right? यस, तो मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ पे जो अभी अवेलेबल व्यवस्था है, जो कि अकाउंटेंट है, वो लोग ये सब कर सकते हैं क्या, और वो कैसे कर सकते हैं? मतलब मुझे ऐसा लगता है बाकी लोगों के भी दिल में यही सवाल होगा। हमारे साथ कुछ खास व्यक्ति भी जुड़े हुए यहाँ पे, जैसे हिमांशु श्रीवास्तव इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम कानपुर, निवेदिता दिघे इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमारे साथ हमारे एक पुराने क्लाइंट जुड़े हुए, हेमांग भाई पारेख, नागपुर के बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो ये सब लोग ये जानना चाहते हैं आपसे कि ये कैसे हो सकता है। पुली, यस सर। Very good. Yeah, fantastic question. First of all, what I have shown you is the highest level of maturity of what all is happening in the MNCs. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलेंस ड्राइव करने किसी भी चीज में तो हमको मालूम होना चाहिए कि हाईएस्ट लेवल ऑफ मैच्योरिटी क्या होती है। हाँ, ठीक है, तो वो मैंने आपको दिखाई है। अभी ये पॉसिबल है या नहीं है, तो इसका आंसर पॉसिबल है। अभी कैसे पॉसिबल है? हाँ, कुछ भी चीज अगर हमको अचीव करनी है तो उसके लिए एक वे फॉरवर्ड बनाना पड़ेगा हमको, और वो वे फॉरवर्ड कैसे बनाना है वो मैं आगे के स्लाइड्स में आपको दिखा रहा हूँ लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सेलेंस एक जर्नी है, और ये जर्नी में अगर हमको ड्राइव करना है, आगे जाना है, तो वी हैव टू फॉलो द बेबी स्टेप टॉक अबाउट क्रॉल, वॉक, रन एंड जंप। सो हमको वो स्टेप से आगे जाना है, क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल माइंडसेट हमारा चेंज करना पड़ेगा सब लोगों को, हमको कि हमको फाइनेंस में एक्सेलेंस ड्राइव करना है। ठीक है, ये पहले बताना पड़ेगा खुद को। दूसरा, हम वी नीड टू बी वेरी की डिजिटल एज टेक्नोलॉजी which is driving all these innovations, which is making the routine repetitive transactions automation. We should be open to take that as a base. ठीक है, एंड उसके ऊपर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी हमको कमिट करना पड़ेगा। नंबर 2। नंबर 3, हमारी जो भी एसएमई की फाइनेंस टीम है उनको हमको अपग्रेड करना भी पड़ेगा। एट द सेम टाइम वी हैव टू गिव देम ट्रेनिंग, दे हैव टू आल्सो टेक लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स, एंड देन वी विल हैव टू ड्राइव इट इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर। सो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आई शो यू, हमको वे फॉर जर्नी बनाना पड़ेगा। वो वे फॉर जर्नी कैसे बनाना है, जस्ट सैंपल में आपको दिखाता हूं।
ऐसे हमको वे फॉरवर्ड जर्नी बनाना पड़ेगा कि 2022 में हमको क्या करना है, किसको क्या करना है. यू कैन सी एबीसी जेकेएल XYZ, किसको क्या करना है. दिस इज व्हाट वी विल हैव टू पुट फर्स्ट. देन वी विल हैव टू पुट 2023 में हमको क्या करना है, 24 में क्या करना है, एंड 25 में क्या करना है. एंड वी हैव टू गिव द नेम्स टू दिस स्टेप्स. ओके, देन वी विल हैव टू प्रिपेयर द जर्नी फर्स्ट कि 2022 का जर्नी ऐसे होगा, 23 में ये ऐसे होगा, 24 में ऐसे होगा, 25 में ऐसे होगा. So as I am saying that it is a journey, I am not promising it can happen in 1 year or 2 years, but as far as we are on the path of achieving the excellence, which we can start with the simple things like day 1 to day 7 की जो भी activities है, we'll start to try to crush it between day 1 to day 5th. day 7 to 14 की activities day 5th to day 8th पे crunch करेंगे. मेरा एक सवाल है, बहुत सारे MSMEs में कहीं पे भी मैं जाता हूँ, बिकॉज माय बिजनेस मॉडल एंड आई वर्क एक्सक्लूसिवली ओनली विथ MSMEs. बड़े कंपनीज के लिए दे हैव रियली गुड पीपल, रिसोर्सेज, स्ट्रेंथ. सो MSME नीड्स लॉट ऑफ हैंड होल्डिंग. सो इट इज माय पैशन टू छोटे उद्योगों को बड़ा करना. ये मेरा पैशन है, मेरा टैगलाइन भी वही है. तो मैं जब भी जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि सभी लोग जीएसटी रिटर्न भरना है, वो 19th या 20th को ही स्टार्ट करते काम, उसके पहले कोई भी काम नहीं करते. व्हाई आई डोंट नो. वेयर एज यू हैव ऑल द डेटा रेडी, बिकॉज वो हमको आदत हो रही है कि ड्यू डेट पे ही काम करना है. दिस इज हाउ मोस्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स आल्सो, नागपुर एंड बाकी ऑल द पार्टिसिपेंट, दे विल एग्री कि क्लाइंट भी रिटर्न जो दिन भरना है उसके एक ही दिन डेटा दे देता है, एंड देन ही एक्सपेक्ट्स द CS टू फाइल द रिटर्न. अगर हम ऐसे करेंगे तो विल नेवर रीच दैट जर्नी, विल ऑलवेज बी देयर. हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, पंकज जी? Yes, 100%. Now I will take questions from other participants. I have not opened the chat window because I don't want to distract from this screen. So if anybody has any questions, can you read those, Pankaj ji? नहीं, अभी तो फिलहाल चैट में नहीं है कोई क्वेश्चन. मुझे ऐसा लगता है आप कंटिन्यू करो, लोग पूछते जाएंगे. वीडियो नॉट स्ट्रीमिंग. नहीं, यहाँ पे तो वीडियो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रतीक जी, आपके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है ऐसा लग रहा है. यहाँ पे तो वीडियो चल रहा बराबर. योगेश सर प्लीज कंटिन्यू. फाइनेंस वर्ल्ड में this is what is happening in India. Do you all guys all agree? These are multiple departments. Every is taking us for ride. After automation which has happened, the way GST law has changed, evolved, number of notifications have exceeded number of chunks. Then when it comes to customs, you know that EDPMS, IDPMS, everything is being, so we know that एक export का कुछ compliance हो रहा है, आपको नोट आ जाता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर, 5 रुपया 10 रुपया 10 पैसे का TDS का नोटिस लोगों का चालू है. यू कंपनी लॉ बोर्ड कितना स्ट्रिक्ट हो रहा है. अगर बीच में मैंने सुना कि एक कोई कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, व्हेन दे सेंड वन लेटर टू सम अदर पर्सन, दे डिड नॉट मेंशन कैन नंबर, 10,000 रुपए का फाइन. देन यू नो ऑल द एजेंसीज, सब लोग पीछे हमारे पास सब डेटा, इंटीग्रेटेड डेटा है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी अगर देख रहे हो, अगर आप AIS खोलते हो, आपने किसको कितना पेमेंट किया आपको मालूम नहीं, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मालूम है आज. तो क्या हुआ है अभी, ये हम टैक्स पेयर है और हमारी धोती सबके हाथ में आज. योगेश सर, यस, आपका वीडियो स्टॉप हो गया, एक तो पॉज हो गया है और आवाज क्लियर नहीं, ऐसे कंप्लेंट कर रहे लोग. अभी मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन बाकी लोग बोले साउंड नॉट क्लियर, इको आ रहा साउंड में.
Okay. So actually there are 3 fiber connections which are put to avoid the issue, but I don't know what हाँ, all अब has ठीक है been आवाज, happening अब today. ठीक है आवाज, अब वीडियो भी स्टार्ट हो गया लगता है आपका। Okay. Slides. Is it okay? नो नो, ऑडियो इज नॉट ओके। Okay, Chi. I'm just switching over to another connection. Is it okay I switch off the video? That is how, you know, the connection may be stronger. नाउ ऑडियो इज ओके। अच्छा, नहीं मेरा वीडियो बंद कर दूं क्या? तो चलेगा वैसा That करके way लीजिए थोड़ी देर, हाँ चलेगा। bandwidth अच्छा मिले. हाँ ठीक है। I'm just switching over fiber optic. Just see if this works well. Is this working well? यस यस। Okay, fine. Sorry, apology for that. Okay. तो क्या हुआ है, हम आज टैक्स पेयर है और हमारी धोती ये सब लोगों के हाथ में है, बिकॉज दे ऑल नो कि हम क्या कर रहे हैं हमारे बिजनेस में, कितना खर्चा कर रहे हैं, किसको कितना पैसा दे रहे हैं, क्या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इंक्लूडिंग पर्सनल थिंग्स, जो भी हम पर्सनल सब चीज कर रहे हैं वो सब चीज इतने सभी डिपार्टमेंट्स को मालूम है। ऑन दिस बैकग्राउंड यहाँ पे आज कल 2 नंबर करना या ऐसा वाला कुछ ट्रांजैक्शन करना, बहुत बहुत इंटेलेक्चुअल बंदा चाहिए कि जो 2 नंबर कर सकता है, you know, because everything is linked, everything is automated and very frankly हम अभी बात कर रहे थे कि हम MSME है, हमको आगे जाना है, बट अगर आप देखोगे गवर्नमेंट हम सब लोगों से बहुत आगे चला गया है। अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स का जब आप रिटर्न भर रहे हो, इनकम टैक्स कंप्लायंस के टाइम पे जीएसटी में आपने क्या सबमिट किया वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बोल रहे, तो कौन आगे है, हम आगे है या गवर्नमेंट हमसे आगे है? नाउ ऑन दिस बैकग्राउंड हमको अभी चेंज करना है, ठीक है? तो अभी हम क्या करेंगे, पूरे वर्ल्ड में फाइनेंस के लोग क्या कर रहे हैं, कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, वो लोग चेंज को कैसे एब्सॉर्ब कर रहे हैं, व्हाट चेंजेस दे आर डूइंग, लेट अस अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। उसके बाद हमको क्या करना है वो हम स्ट्रक्चरली समझ के लेते हैं, ठीक है? सो नाउ आई एम गोइंग टू प्ले वन वीडियो एंड पंकज जी, आई विल पॉज फॉर 1 मिनट आफ्टर पुटिंग द वीडियो। अगर वीडियो का साउंड क्लियर नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे बोल देना, ठीक है पंकज जी? हाँ यस यस यस। So this video talks about 2 scenarios. One scenario जहां पे MSME लोग या अकाउंटेंट लोगों ने डिसाइड किया हम कुछ भी हमें चेंजेस नहीं करेंगे, we will be same as it is, हमारे प्रॉब्लम्स वैसे ही रहेंगे, हम MSME है, we have working capital struggle, we have cash flow problem, we don't want to change anything, we'll continue same way फायर फाइटिंग हम करते रहेंगे, थोड़ा बहुत मार्जिन कमा रहे उतना ही कमाते रहेंगे एंड वी विल नॉट चेंज आवर सेल्फ। ऐसे जितने लोगों ने सोचा था उनका क्या और कैसे यू नो सिचुएशंस में क्या क्या बदल हो रहे वो लोगों में वर्ल्ड वाइड, और जो लोगों ने बोला फाइनेंस के बंदों ने कि हाँ वी वांट टू चेंज आवर सेल्फ एंड एग्जैक्टली दे चेंज, सो व्हाट दे चेंज्ड इज व्हाट इज आल्सो रिफ्लेक्टेड हियर। वो फाइनेंस के जो भी MSME के लोग हैं उन्होंने चेंज करने के बाद कंपनी में क्या बदलाव आए, उनमें क्या बदलाव आए, वो पूरा इस वीडियो में आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये 2 मिनट का वीडियो है। आई एम रिक्वेस्टिंग ईच वन ऑफ यू टू यू नो go through this video and post video I will be requesting your comments in the chat box on the video. Please listen to it carefully. Digital transformation. Pankaj ji, is voice clear?
Yes, clear है, कोई problem नहीं. Okay, fine. So I'm playing the video. Digital transformation opens the door for many opportunities within finance. Today, finance is asked to essentially set the course for the years to come. Let's take a closer look at two possible scenarios for the future. We're in the year 2022. Finance as a division has significantly shrunk. In many areas, standardization and automation have taken place. Many processes have been automized efficiently through robotics. Finance consists of a small team of specialists for topics like IFRS, taxes, risk management, compliance, regulation, and financing mechanisms. Processing of financial statements is now fully automated. The operational responsibility for the closing process is now owned by IT. Business decisions are primarily taken based on information derived from operational functions. Marketing and sales, as well as technology, invested early in big data and analytics and are now jointly leading the Center for Analytics. Finance has lost its leading role and is no longer involved in important decision-making. Instead, it focuses on contributing special expertise where needed. The responsibility of planning and forecasting has shifted completely towards operations. Early on, they set up big data-based prediction models within their divisions. The role of finance is limited to planning of financial mechanisms, taxes, as well as currency and consolidation effects. Finance has become a mere center of excellence that is limited to providing highly specialized financial expertise upon request. 2017. Finance missed the opportunity to claim and shape new digital trends and actively build a future vision for themselves. Finance was overrun by digitalization and lost its role of being part of the strategic development of the entire organization. 2017. Finance decided to become a leading pioneer of digitalization. Finance analyzed digital trends for themselves and developed a target and vision for the future. The goal was to act, not react, and develop a common vision. Upon this foundation, new opportunities were identified, and as a result, a newly formed roadmap has been developed to define specific actions for the years to come. An interdisciplinary team coordinates analytical topics and combines deep business competence with technical know-how. Finance was the driver for building the Center for Analytics. Information from various sources are combined in real time. The planning and forecasting process has been automated to the highest degree possible with modern statistical methods and big data. The forecast preparation is done by a push of a button, and finance is able to focus on the development of new insights. From day one, all finance executives have been involved in the development of the target vision. Finance now combines strategic competence with in-depth business know-how. New skills in the area of data modeling and analytics have been built up and used successfully. Finance focuses on cross-functional and interdisciplinary cooperation. 2022. Standard processes have been fully automated. Finance has gained time and capacity to consider and work with analytical-related questions. Finance is the co-pilot in the context of strategic development and appreciated as a business partner for operational functions. Now, it's time to define your future in the digital world. Fine. So I would like to take some views from the participants on this specific slide, and I'll just stop sharing. So what I want to understand is in the context of whatever video which has been shown, maybe few of you can speak out that whether you are agreeing whatever is shown in the video. So you can mention two things: your views on the video, your views on the approach with which we are taking this session in terms of agreement or otherwise. And one more thing which I want to understand is, if you are agreeing, do you feel like some change which needs to be done within your organization based on the understanding which you have developed so far in last 1 hour? That will help me to know whether my session is really becoming effective
and then we'll take it to the next slide. So maybe 5-10 minutes. I just want to have the interactive session. So I just want to make it open. Anyone who want to say. Okay, so scenario and scenario 2, very simple. One question one panelist has asked is that scenario 1 is, yeah, okay, fine. Yeah, so I'll answer each of the questions. Okay, I will take the first question. Scenario 1 was where finance team, they decided that they don't want to change. So the same routine way of work they started, doing the things. And what they did is that they did not change themselves. And scenario 2 is where finance team, they decided that their job is not only to do accounting and closing, but their job is to business partnering. So they started understanding the operation. They started participating in the process of preparing operations budget. They started, helping the owner and the entrepreneur in decision-making support. Then they started to drive the business efficiency into each pricing decision. They started participate. Then they started designing the KPIs, KRAs, so that finance का रोल जो है, like finance as a function, जहाँ पे भी impact हो सकता है, each and every operations, they started doing that. And you have seen the difference that finance people made their role, which is a typical role, which is pursued as only post-mortem, which has totally changed. And then they became the strategic business leader. These are the two scenarios. So that is the answer to the first question, which is in the chat window. Then there was one very important question, which I can see, and thank you for raising that question. It is that this is a Deloitte presentation and it is more for MNCs, not for MSMEs. Okay, sir. Thank you for that. First of all, the presentation is of Deloitte. Yes, I agree. Since I don't want to take any copyright issues, I told that it is a Deloitte available on YouTube. You can see this presentation. So it is for MS. It is only for MNCs. This is probably not the right way to interpret that video. Why? The reason I will tell you. As MSME, we can definitely do a lot of things. MNCs, what they are doing is just as an eye-opener for us. So we need to know where they have reached, where the finance guys have reached. But when it comes to the, if you peep into the role of any entrepreneur, I'm sure a lot of MSMEs, entrepreneurs are here in this session. If you ask any MSME, what role they want their finance team to play, and I'm sure 100% everyone will agree, they will say that my finance team member, he has to participate in understanding the pain areas in my business. He need to help me, my business grow. He need to help me how I can reduce the cost. He need to help me which processes needs to be put. He need to navigate me because he has a good commercial acumen. He need to blow the whistle and tell me if something is going wrong. So, and if at all he has to do all these things, he has to change. He has to give some different perspectives. What is happening in other MSMEs? There are some MSMEs where I have delivered financial excellence. Their maturity score was almost 90%. They were closing the books of account on the second work day. Now, why I can't do it? So this video is just to showcase that if at all you have to reach, what digital transformation can do wonders. But again, everything is not digital transformation. It is all about your perspective. First of all, finance person should always think, I am not only a finance guy, I am the business partner for my owner. Entrepreneur के साथ मुझे जाना है, उसको बड़ा करना है. एंड वो जो भी बड़ा करने का सीक्रेट फॉर्मूला मेरे पास है, मेरी मुट्ठी में पावर है, क्योंकि मुझे एक अलग सा ब्लेसिंग है बीइंग अ फाइनेंस पर्सन. कमर्शियल एक्यूमन है मेरे पास. सो एक चीज आप देख रहे होंगे कि फाइनेंस का बंदा है वो कहीं पे भी जा सकता है फॉर द वर्क. फॉर एग्जांपल, फाइनेंस गाय कैन वर्क इन हॉस्पिटल इंडस्ट्री, hospitality industry, manufacturing industry, service industry. It doesn't make any difference for a finance guy because each and every owner, he understands top line and bottom line language is same.
KPIs of finance are same across the globe. NGO के लिए भी अगर फाइनेंस का बंदा काम कर रहा है, his role is going to be same. How effectively I have to monitor the performance, the objective of NGO. Is it being used, deployed, money is properly deployed or not? वही उसका भी objective है. So this video is definitely applicable for MSMEs. It gives you a larger perspective. I hope I answered second question. Now, योगेश सर, ये सवाल का Yes. जवाब मैं भी थोड़ा एक ऐड करना चाहूंगा, मेरा व्यू इसमें। इन्होंने जैसा Yes. कहा है कि आपने हमें डेलॉइट का वीडियो दिखाया, और डेलॉइट के पास कोई एमएसएमई क्लाइंट नहीं होते। डेलॉइट के पास सब टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, अडानी, अंबानी सब ऐसे क्लाइंट है डेलॉइट के पास में। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे कि हमारा अगर कोई रिश्तेदार है जो क्रिकेटर बनना चाहता है, तो उसे हम बातें किसकी बताएंगे? हम हमारे पड़ोस में जो दूसरा क्रिकेटर है उसकी बातें बताएंगे, या सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की बातें बताएंगे? तो हम उसे यही कहेंगे, भैया तू क्रिकेट खेल रहा तो तू तो विराट कोहली की तरफ ही देख के क्रिकेट खेल, उसके जैसा बनने की कोशिश कर। right. हाँ, यस, प्लीज गो अहेड। Yeah. So thank you for helping. Pankaj ji, can you take the next question? Maybe I would like to answer all the questions. Yes, there are some feedback about the session currently. It is good to have transformation with high level milestone. We can define and review in the process achievements in right directions. उन्मेश नार्वेकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे पुराने मित्र है मुंबई से। इन्होंने कहा है चेंज इज इनएविटेबल एंड टू सर्वाइव MSMEs नीड टू चेंज देयर माइंडसेट फर्स्ट, देन एवरीथिंग विल बी इजी टू एक्सेप्ट एंड अडॉप्ट। दिस इज अ क्वेश्चन। सॉरी गगन जी का एक क्वेश्चन था। आपने इट इज लिखा है इसलिए मैंने ये असर्टिव स्टेटमेंट समझा, मैं उसको इज इट करता हूँ। इज इट गुड टू हैव ट्रांसफॉर्मेशन? व्हाट हाई लेवल माइलस्टोन वी कैन डिफाइन एंड रिव्यू? Yes, I will answer that. हाँ, Very good. First of all, thank you for making this very, very interactive. Now, this question is what milestone we can have. Now, before we go to the milestone, first we need to assess ourselves. Where are we, right? Like, जैसे बेबी है, मैं हमेशा वही एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। बेबी क्रॉल स्टेज पे है, और इज इट वॉकिंग, और इज इट रनिंग, और इज इट जंपिंग, वो पहले समझ लेते हैं। अगर बेबी क्रॉलिंग कर रही है तो वी कैन नॉट हैव द माइलस्टोन की व्हाई बेबी इज नॉट जंपिंग। ओके, बेबी को क्रॉलिंग प्रॉपरली करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वॉकिंग करना है। तो हमको सबसे पहले वो डिसाइड करना है कि हम कौन से स्टेज पे। फॉर एग्जांपल, आई विल टेल यू वन एग्जांपल, लाइक बैंक पेमेंट का प्रोसेस है। बैंक पेमेंट के प्रोसेस में टिपिकली द मैच्योरिटी टॉक्स अबाउट लाइक यू आर स्टार्टिंग द बैंक पेमेंट विथ everything is by check, no cash. This is the first level of maturity. Okay, we can say it is like a crawl maturity. Walking maturity is that you are converting all the payments into CSV TXT file. Okay, this is maturity level 2. Okay, third level maturity is you have established host to host connectivity, whereby bank server is directly pulling the data, and it is directly uploading onto the bank website on the due date the payment. ओके, टैली से ये पॉसिबल है कि वो एक सर्वर पे आपकी CSV TXT फाइल रख देता है, वहां से बैंक पुल करके ऑटोमेटिक अपलोड कर देती है ड्यू डेट पे। ओके, दिस इज मैच्योरिटी लेवल 3। एंड मैच्योरिटी लेवल 4 इज लाइक यू हैव इम्प्लीमेंटेड रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन व्हिच इज टिपिकली कॉल्ड एज बॉट। एंड वो बॉट क्या कर रहा है कि आपके पूरे पेमेंट वाउचर पुल कर रहा है, एंड ऑटोमेटिकली इट इज प्रोसेसिंग। इवन बैंक इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, एंड यू फॉर प्रोसेसिंग द पेमेंट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल, अगर आप 3-वे मैच्योरिटी, 3-वे मैच की बात कर रहे हो, लाइक 3-वे मैच में टिपिकली क्या होता है कि GRN इज गेटिंग मैच टू द परचेस ऑर्डर इज गेटिंग मैच टू द इनवॉइस, एंड दैट इज हाउ द इनवॉइस बुकिंग इज हैपनिंग। सो ऑल द 3 थिंग्स, PO, GRN एंड इनवॉइस, एवरीथिंग इज 100% करेक्ट। नाउ, अगर इनवॉइस, PO और GRN तीनों मैच हो रहे, टेल मी व्हाई यू नीड अकाउंट्स पेबल वाउचर टू बी बुक्ड बाय योर टीम? The bot will do the job. So अगर ये स्टेज पे अगर आपकी मैच्योरिटी है तो शायद you are the highest maturity level there. बट ये सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि कौन से माइलस्टोन पे हमको जाना है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम पहले देखेंगे कि हर स्टेज में हम कहाँ पे है। लाइक
मैच्योरिटी लेवल 1 में है, अगर क्रॉल कर रहे हैं हम, तो क्रॉलिंग तो प्रॉपर कर रहे हैं क्या, और इज इट लाइक अ बेबी ओनली बॉर्न, ओके, खाली हाथ पैर मार रही है, नहीं जस्ट बॉर्न बेबी है, या हम प्रॉपर क्रॉलिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो प्रॉपर क्रॉलिंग इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. अगर प्रॉपर क्रॉलिंग बेबी नहीं करेगी, देन बेबी कैनॉट वॉक. सो वी विल सी what is the stage of maturity, and accordingly we will establish or design the milestone. So hope I have answered the question. उनका एक और उसमें बाद में क्वेश्चन है, कैन यू शेयर अ मॉडल विद डिफरेंट पैरामीटर्स नीड टू चेक एंड लेवल ऑफ मैच्योरिटी विद करंट स्टेट. मतलब उनका कह रहा है कि आपने जो बता दिया हमको समझ में तो आ गया, लेकिन हम कहाँ पे है, हम ये एनालिसिस कैसा करेंगे, इसका क्या सिस्टम है. Oh wow. Actually that is my next slides are only focused on that. हाँ, Okay, but since you have asked the question, you सर know, मुझे ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं और आप अपना प्रेजेंटेशन कंटिन्यू कीजिए, उनके शायद क्वेश्चंस कुछ जो है जो ऑटोमेटिक आंसर हो जाएंगे. fine. So I'll just answer this question quickly in 1 second, and then we will move to the next slide. So सबसे पहले हमारी मैच्योरिटी कहाँ पे है, इसका मॉडल ये है. ये मैच्योरिटी का मॉडल है. ये आपके फाइनेंस के इतने सारे एरियाज हैं, और ये हम आपको एसेस करके देंगे. तो कैसे एसेस करना है वो अभी हम सिखाएंगे कि हर मैच्योरिटी में आप कहाँ पे हो. फॉर एग्जांपल अकाउंट्स रिसीवेबल की मैच्योरिटी ऑलमोस्ट 80 है आपकी, कॉस्टिंग की मैच्योरिटी लेट से 20 है और 30 है. सो दिस इज हाउ यू नो वी विल बी असेसिंग द मैच्योरिटी of your organization when it comes to the finance processes. So this is the model. So I hope I have answered that question also quickly. Now we will go to the next slide. Okay, now let's see what some of the top business finance leaders globally they are saying. Okay, so Jack Alexander, he has written the book on performance dashboard and analysis for value creation. What he is saying, let's see. He is saying that finance function loses the potential to steer their organizations to success when they defer performance management to other functions. थोड़ा टेक्निकल है बट और एक बार पढ़ूंगा मैं. फाइनेंस फंक्शन लूजेस द पोटेंशियल टू स्टीयर देयर ऑर्गेनाइजेशन टू सक्सेस. फाइनेंस के लोग और फाइनेंस की टीम मेंबर अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्टीयरिंग पकड़ती नहीं है और उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो इसकी मेन रीजन क्या है? दे आर डिफरिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टू अदर फंक्शंस. फाइनेंस के लोग बोल रहे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मेरा काम ही नहीं है. मेरा काम क्या है? किसी ने कुछ परफॉर्म करके रख दिया है, मेरा काम इतना ही है, बस वो परफॉर्मेंस को लेना है और उसका खाली रिकॉर्डिंग करना है. इतने काम के लिए ही मेरा जॉब है, मुझे उसी के लिए हायर किया है. दैट्स ऑल. सो आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्टमार्टम. कुछ तो चीज हुआ है, आई एम रिकॉर्डिंग, दैट्स ऑल. तो अगर हम फाइनेंस के लोग ऐसा बात करना चालू करेंगे, डेफिनेटली चक्रधर या अपनी जो भी हाथ की स्टीयरिंग है ना, वो दूसरे किसी के हाथ में चली जाएगी. तो मैं सबको दरख्वास्त कर रहा हूं कि अरे आप फाइनेंस के लोग हो, आपको ऑर्गेनाइजेशन का पहले स्टीयरिंग पकड़ना है. स्टीयरिंग पकड़ना इसका मतलब क्या है? आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है, बाकी डिपार्टमेंट के बंदे लोग क्या क्या कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आपको आपके हाथ में लेना है. आपको उसका रिपोर्टिंग करना है. आपको वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए प्रोसेसेस डालना है, क्योंकि हर चीज में फाइनेंस इन्वॉल्व है. अगर एक लेबर आपके शॉप में ओनली वॉकिंग इवन 100 meters, इट हैज इम्पैक्ट ऑन फाइनेंस, इट हैज इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट, इट हैज इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू, बिकॉज वो ऐसे ही चल रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है. It has impact on the productivity. Maybe we have not booked his cost of that just 10-minute walking without any reason in the bid or in the costing what we have provided to the client. So
each and everything you need to link. The moment you say it is not my job, I want to defer it to other functions, your importance is lost. Fine. So this is one slide which talks about performance management as a business quote. And this is Jack Alexander, who is FP&A expert, who is a consultant and author. Now let's go to finance के लोगों को क्या करना है, how they have to define their role. This is what is mentioned here. Typically what is happening is finance people, whenever any work or any job, if you ask them, okay, you are working in this company in the finance department, what do you do? So somebody will say, you know, sir, I'm booking the accounts payable voucher. Another person, he will say, sir, I am filing the returns and I am making the payment on due date. Third person, he will say, I'm processing the salary. Fourth person, he will say that I am doing the fixed asset accounting. Now, first of all, we need to remove this mindset. What you are doing is not the work. It is the process, which you are following. But what is the output? You start defining your role and responsibility based on the output, not based on the process, what you are doing. What does it mean? अगर फाइनेंस का बंदा बोलता है कि मैं मंथ एंड में क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री मारता हूं और कॉग्स ऑटोमेटिक आ जाता है टैली में, राइट? इफ यू हैव इंटीग्रेटेड टैली और इंटीग्रेटेड एसएपी ओरेकल, देन प्रोबेबली कॉग्स इज ऑटो पॉपुलेटेड. सो ही इज सेइंग दैट आई एम प्लेसिंग द क्लोजिंग स्टॉक एंट्री. डोंट से लाइक दिस, not right on your part. You say that I am a finance guy, I am responsible for controlling the COGS, cost of goods sold. मेरी जिम्मेदारी है ये कंपनी की, which is reflecting 60 to 70% of the spend. So my output is controlling the COGS of this company, not to pass closing stock entry. Similarly, somebody is giving you stock transaction data, you are doing inventory audit. Let's say you're doing inventory audit once in a quarter, more matured organization. Other organization audit के लिए करना है MSME में, इसलिए साल में एक ही बार करते हैं, ईयर एंड पे हम इन्वेंटरी ऑडिट करेंगे. तो the moment you say that inventory audit is your process gone, you say that as a finance, my responsibility is controlling the inventory. I am the person who should ask system stock, actual stock, physical stock, why gap? Because you are not directly controlling the inventory, but you are responsible, you are a custodian of the company's money. So you say inventory control is my job, then things will start coming in place. Your importance will automatically go up in the minds of the owner. Same way, payroll data processing. जब भी payroll का कुछ आता है, I will just process the data. Don't say that. You say that I'm controlling the payroll. What I'm doing, controlling means, first of all, I'm checking नवंबर महीने में का सैलरी मुझे दिसंबर में पास करना है. I will check what was the October month salary, how many additions are there, how many deletions are there in November, how many people we have given the increment. That is how one derived figure you will calculate. What should be November payroll and actual payroll जो HR दे रहा है. This is how you are controlling the payroll. The moment you say HR process करके देता है, हम वो एंट्री मार देते हैं, उसका एक जेवी मार देते हैं, दैट्स ऑल, एंड वी पे. बैंक को एक लेटर भेज दिया, ऑटोमेटिकली एनईएफटी आरटीजीएस हो गया. नो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द पेरोल. नेक्स्ट, अकाउंट्स पेएबल के ट्रांजैक्शंस बहुत सारे आपके पास आते हैं, लाइक स्पेंड का ट्रांजैक्शन आता है, अकाउंट्स पेएबल के आते हैं. द मोमेंट यू से दैट आई एम डूइंग द स्पेंड रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग, गॉन. यू से आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द स्पेंड. खर्चा क्यों हो रहा है, मार्केटिंग इतना खर्चा क्यों कर रही है, आर दे एटलीस्ट रिकवरिंग द रेवेन्यू वॉट एवर इज बीइंग स्पेंट ऑन देयर सैलरी, व्हाई दे आर गोइंग फॉर अ हेवी सेल्स प्रमोशन, दे आर कीपिंग ट्रैवलिंग, बहुत आइश कर रहे हैं लोग, बट इसमें से आउटपुट किधर है. आई विल नॉट अप्रूव दिस स्पेंड अनलेस दे प्रूव मी दैट जस्टिफिकेशन फॉर दिस स्पेंड. जस्ट स्टार्ट होल्डिंग लाइक दिस. देन सेम वे AR मैनेजमेंट. मोमेंट यू से हाँ इनवॉइस बनाते हैं हम सर, ये हमारा काम है अकाउंट्स में. नो, नॉट इनवॉइस बनाना तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम है अकाउंट्स रिसीवेबल को कंट्रोल करना. सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन द एजिंग साइड. द मोमेंट every monthly you are going to do the review of aging,
the moment it has crossed, even statutory audit is also compelling you कि अगर आपके AR cross हो रहे तो reason बताओ. See what is happening. हम रोल नहीं प्ले कर रहे, वो statutory authorities are playing the role by way of disclosure. Why we cannot do that on a monthly basis? कि we are controlling the AR. That is how you start reflecting your role. Next, perform account based reconciliation. तो moment you say sales order के transaction आते हैं, AR के reconciliation नहीं. Again AR control. Payroll accounting, what are we achieving? Finance के लोग कुछ भी हो जुगाड़ करके सैलरी का जो पे डेट है वो दिन पे सैलरी के लिए पैसा लेके ही आते हैं. ओके, सेल्स के लोगों के सर के ऊपर बैठेंगे या एंटरप्रेन्योर को बोलेंगे, पुश करेंगे, एंड दे विल एंश्योर दैट पीपल आर पेड ऑन टाइम. सो वी आर नॉट डूइंग पेरोल अकाउंटिंग, वी आर एक्चुअली ensuring that all employees are satisfied and happy. Same way, there will be a lot of things which you will have to rethink, like fixed asset management example. You will say that I'm doing the fixed asset control, not entering, doing the entry of the fixed asset register. Insurance, आप क्या बोलते हो कि इंश्योरेंस का पेमेंट किया हमने? No, not इंश्योरेंस का पेमेंट किया है. You are ensuring the organization is risk free. You have ensured the controls that any kind of a calamity, कुछ भी हो जाएगा, आज आपके हाथ में secured है because of finance. हम statutory audit कर रहे हैं, ऐसा मत बोलो. आप बोलो हम statutory compliance ensure कर रहे हैं कंपनी का, because audit करना is not a compliance. Ensuring it is a risk free. जब भी हम कुछ सबमिट करते हैं, ऑडिट का रिपोर्ट रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑडिट में एनालिटिकल रिव्यू से हमको समझना है, अदरवाइज ऑडिटर विल साइन द बैलेंस शीट, बट हैव यू अंडरस्टूड रियली ईयर ओवर ईयर व्हाट चेंज हैज हैपेंड? हैव यू डन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिटिकल रिव्यू? आपके पास अपने रखा है क्या वो? देन नेक्स्ट इज कंप्लायंस ट्रांजैक्शंस. डोंट से दैट नोटिस आएगा तो हम डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, ग्रुप ऑडिट करते हैं. नो, माय रोल इज टू एंश्योर हेल्दी टैक्स कंप्लायंस. कंपनी का कुछ भी एक्सपोजर है, मुझे मालूम है हिडन एक्सपोजर, कुछ जीएसटी में मैं गलती कर रहा हूं, डिपार्टमेंट को मालूम जब पड़ेगा तब वो निकालेंगे वो गलती. नो, माय रोल इज, अगर ऐसा कुछ हो गया, हम वन वे से जा रहे, हमको मालूम है, हर एवरी बिजनेसमैन, एवरी अकाउंटेंट, दे नो दैट समथिंग दे हैव डन, ट्वीक द ट्रांजैक्शन सो दैट डिपार्टमेंट को मालूम नहीं होना चाहिए. बट देन हैव यू प्रोटेक्टेड द कंपनी? एटलीस्ट एक प्रोविजन करके रखो बुक्स में. अगर कभी कुछ आ गया गलती से, वन वे से सभी लोग जाते हैं, बट कभी कभार पुलिस पकड़ता है, वो फाइन मारता है फिर, देन हैव यू डन काइंड ऑफ अ प्रोविजन फॉर दैट? सो योर जॉब इज डिफ्यूजिंग एक्सपोजर, नॉट इंश्योरिंग की रिटर्न भरना, नॉट इंश्योरिंग की ओनली कंपनी को रिप्रेजेंट करना. अगर आपका ग्रुप है, बहुत सारे एमएसएमईज में मैंने देखा है कि ओनर जो लोग रहते हैं, उनका एक रहता है एलएलपी, एक में वो सोल प्रोप्राइटर रहते हैं, एक में प्राइवेट लिमिटेड में कुछ इंटरेस्ट रहता है, एक पार्टनरशिप में इंटरेस्ट रहता है. तो यू हैव टू एंश्योर कि वो ओनर का ओवरऑल ग्रुप का कंप्लायंस आल्सो बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू आर अ एसएमई अकाउंटेंट. यूटिलिटी, अगेन अवॉइड डिसरप्शन. आप ऐसा मत बोलो कि हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं. नो, यू आर एंश्योरिंग ऑपरेशनल डिसरप्शन इज अवॉइडेड. नाउ what are the more mature things which you need to do? Those are mentioned here where there is no direct input, but still it is expected. You are receiving multiple input from various department as a finance guy. Various company policies are there. Lot of MIS reports are being generated by you. You are doing coordination with the plan. Some budgeting करते हो, आप ट्रेजरी करते हो. आप मत बोलो ये काम कर रहे हो, आप बोलो मैं मैनेजमेंट को एक कंसोलिडेटेड बिग पिक्चर दे रहा हूँ. आज पूरी कंपनी में क्या हो रहा है, आई एम गिविंग टू माय बॉस हेलीकॉप्टर व्यू. देखिए यहाँ पे वो ये हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है, क्योंकि एज अ फाइनेंस पर्सन यू आर ब्लेस्ड विद द यूनिक क्वालिटी ऑफ अ कमर्शियल एक्यूमन. डोंट फॉरगेट दैट. सो आई एम टेलिंग टू द मैनेजमेंट, ओके दिस इज द वर्टिकल वेयर यू नो थिंग्स आर नॉट हैपनिंग राइट. एक खाली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट P&L बना के दे दिया, दैट इज नॉट व्हाट इज योर जॉब. यू हैव टू गिव द कंसोलिडेटेड बिग पिक्चर, व्हाट ऑल इज हैपनिंग. Then you have to blow the whistle. कोई कुछ गलती कर रहा है, he is not achieving the target, पॉलिसी का वायलेशन करना है, you have to blow the whistle. Your role is as a whistleblower by way of generating the triggers, avoiding all the surprises. Then you have to ensure that budgets are controlled, at least put effort.
कि बजट वर्सेस एक्चुअल कितना गैप है, वो गैप को आप पब्लिश करते जाओ. Then timely fund availability, optimum utilization is your job. That is how you are ensuring this process. Costing में आप costing कर रहे हो ऐसा मत बोलो. You tell I am helping the business to win the order. Tendering, bidding. मेरा मालिक है, वो देखता है, वो मुझे बोलेगा कि कॉम्पिटिटर हमसे 20% कम में कोट कर रहे हैं. So I will also quote because I want to win the order. You should say, sir, this is not the right way. You may see that your revenue and top line is increasing, but at bottom line you are taking a big hit. And this we have been doing continuously for last 3 to 4 bids. Maybe revenue we have gone up, but when organization performance is, when you hit the bottom line, how high you bounce is the performance which is measured. तो ये आप सब चीज आपको ये तरीके से सबको बोलना है. The moment you say this and see the way your thought process, the way the things you will do is change, and see the difference. आपके मालिक आपसे इतने खुश होंगे. Similarly, you will get that fulfillment kind of a satisfaction for doing this kind of a work. ठीक है? Now I will take a pause for a minute here, and I just want to take some views on the roles which I have defined, whether you guys are agreeing or not. कुछ आपके सवाल है इसके ऊपर, तो I just want to take those questions now. पंकज जी, पंकज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है. आई थिंक यू आर ऑन म्यूट. मुझे ऐसा लगता है कि प्रेजेंटेशन हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद कोई सवाल होंगे तो लोग पूछेंगे. Let us complete the session first. Right, Pankaj ji, how much time I have got? Accordingly, I will tweak my remaining slides. You can end it in 10 minutes. Fine. Fine. Okay, so 12:32 is the target. I will try to meet that target. Okay, so basically we are going to talk about the maturity now. I'll be running through the remaining slides, and if required, we can have one more separate session, Pankaj ji. Yes, Yeah. So basically, this is the maturity with which we are going to drive the function. We are going to check where are we today, because somebody has asked the question like how to design and decide the maturity. So what I'm going to do is that I'm directly going to go to the maturity assessments and designing the maturity now. Okay, so this is one simple model which I have designed, and this was the one of the question by one of the participant, that what is the model. So model is very simple. आप इतना सिंपल चीज करो, ये मैच्योरिटी का मॉडल है. सबसे पहले क्या करो आप, यू स्टार्ट मॉनिटरिंग ईच थिंग. मॉनिटरिंग का मतलब क्या है कि आप हर एक्टिविटी को कहाँ तो रिकॉर्ड करना चालू करो. Either record in Tally or record in SAP, Oracle, MFG Pro, BAN, whatever. Record in Excel, और कुछ आपका नोटबुक है उस पर रिकॉर्ड करते जाओ पहले, या आप TXT फाइल में रिकॉर्ड कर सकते हो. PPT है तो उधर रिकॉर्ड करो. कुछ भी जो भी चीज हो रहा है ना आपका, प्लीज रिकॉर्ड, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू रिकॉर्ड वी कैन नॉट मूव हेड. तो पहले मैच्योरिटी में जो भी चीज आपको करना है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, बिकॉज टुडे डेटा इज लाइक अ गोल्ड माइन. सो डेटा कैन डू लॉट ऑफ वंडर. सो फर्स्ट रिकॉर्डिंग. उसके बाद आप मेजरमेंट कराना चालू करो. मेजरमेंट में आप क्या करो कि you start understanding whatever you had done the recording. For example, revenue for the current month. Okay, EBITDA for the current month. EBITDA as a percentage of revenue. Okay, start measuring each and everything. Net working capital for the month. Working capital in terms of the days is measurement. Example. Then what you do is start analyzing. Typically analyzing may you will analyze in multiple ways. You will start year over year analysis, like what was my revenue for the last year versus current year, how much is the percentage growth, example. Or you can measure it based on the budget, or you can measure it based on the forecast. Okay, so start analyzing each and everything, whatever you are measuring. Okay, so what has been the trend in my working capital or in terms of the days. Then start reporting.
Okay, in reporting, what you do is entire analyze data, put some kind of a shape to it, like spend bridge report or indirect method cash flow as a report. So start designing, developing the reports, start publishing it to the management. Once you start designing, developing the report, always benchmark. Benchmarking you can do 3 ways. One is you benchmark with your own past data. अगर आप और मैच्योर्ड हो तो आप बजट के साथ वो मंथ का डेटा बेंचमार्क करो, और अगर आपने मैच्योरिटी डेवलप किया है तो आप रोलिंग फोरकास्ट जो हर मंथ आप रोल करते हो, नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, बिकॉज बजट साल में एक ही बार बनता है, उसके साथ बेंचमार्क करना चालू करो. बाद में आपको इनोवेट करना है, कंटिन्यूअसली लर्निंग यू विल हैव टू डू, सो दैट नए नए पैरामीटर्स को लेके आना है. तो ये बेसिकली एक मॉडल है जिसमें आपकी अकाउंटिंग सिस्टम, अदर सिस्टम, इसको आप सिंप्लीफाई, ऑप्टिमाइज और स्टैंडर्डाइज, ये हिसाब से आपको ये मॉडल मैंने डिजाइन किया है. ये मॉडल में बेसिकली आप केपीआईज मेजर करोगे, फाइनेंशियल केपीआई, प्रोसेस केपीआईज, कंट्रोल्स केपीआईज एंड पीपल, एंड यू विल टेक द मैच्योरिटी टू द नेक्स्ट लेवल. नाउ आई विल skip to the remaining slides and I will directly go to the some of the maturities which I have designed. Okay, so these are the some of the slides where you are going to understand what all you are doing. So I'm just skipping those slides. So this is one workshop which we can conduct in the next session. Okay, so now I'm directly going to the maturity. So these are the typical maturity slides which is telling you need to assess where you are. Like we'll start with the same example which I have taken, like bank payment process. Okay, you can also call it more layman's language. This is, if you find this language more advanced, it's like a capability maturity matrix बोलते हैं हम management की terminology में. But you can call it like a simple, this is like a baby born. बच्चे ने अभी जन्म लिया है तो बैंक पेमेंट कर रहा है. So that is what is analogy is like बच्चे ने अभी जन्म लिया है, बहुत सारा मैनुअल पेमेंट कर रहे हो, अकाउंटिंग बाद में कर रहे हो. थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया है, he has started crawling. क्रॉलिंग में आप क्या काम कर रहे हो, मैनुअल पेमेंट लोकल एंड इनपुट के लिए कर रहे हो, अकाउंटिंग सेम टाइम पे कर रहे हो, मंथ एंड पे अकाउंटिंग नहीं कर रहे हो, सेम टाइम. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, बड़ा और बच्चा और थोड़ा बड़ा हो गया है. ओके, ही हैज स्टार्टेड वॉकिंग. ओके, वॉकिंग में क्या करता है बच्चा, पेमेंट्स आर जनरेटेड थ्रू फ्लैट फाइल्स, CSV TXT फाइल बना रहे हो, एडवाइसेस बना रहे हो, इंपोर्ट पेमेंट्स आर प्रोसेसिंग. ओके, तो ये अभी वॉकिंग चलो हो गया. ओके, वॉकिंग आप बराबर कर रहे हो. ओके, अभी आपको रन करना है. ओके, बच्चा भागना चालू कर रहे हैं, भागने के टाइम पे क्या कर रहा है, होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी आपने एस्टेब्लिश की है. ईमेल एडवाइसेस आर ऑटोमेटिकली सेंट. जब बैंक पेमेंट प्रोसेस करे तभी सप्लायर को अलॉन्ग विद द पेमेंट का डिटेल्स दे रहे, कितना TDS डिडक्ट किया है, कौन से इनवॉइस के लिए हमने पेमेंट किया है. Most of the MSMEs don't have the basic process of even sending the payment advice to the supplier, and then that's how they get into the reconciliation issues. Then import payments are processed through document warehousing. और अगर आप बोल रहे नहीं, अभी बच्चा बहुत मैच्योर्ड है, बहुत जल्द जोर से भाग रहा है, अभी उसको लाइफ में कुछ अचीव करना है, सो ही विल नीड टू टेक अ जंप. ओके, जंप में आप क्या कर रहे हो कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, डिजिटल ड्राइव आपको आपके MSME लाना है. You will engage with some company, let's say Tangentia. Okay, उनका RPA है, they give it their bot on hire, rent पे देते हैं उनका bot, 30,000 रुपए लेते हैं महीने में, जो आपका इंश्योर कर रहे हैं जितना भी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है वो ऑटोमेटिक होता है. तो फाइनेंस के बंदे का रोल एनालिसिस पे फोकस कर सकता है वो, कि बॉट से थ्रू ऑटोमेटेड प्रोसेस जितने वाउचर नहीं बुक होते उतने ही वाउचर फाइनेंस के बंदे को बुक करने हैं. ऐसा वाला प्रोसेस आपने डाला है. ऐसे हर चीज का एक एक मैच्योरिटी है. तो वी विल हैव टू डिफाइन द मैच्योरिटी इन दिस मैनर फॉर ईच रोल, एंड देन विल हैव टू असेस आवरसेल्फ. तो आई विल जस्ट क्विकली रैप इट अप. फॉर एग्जांपल, मंथली फाइनेंशियल्स आपको बनाने हैं, अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, खाली एनुअली ऑडिटर ही कर रहा है आपके लिए. वो भी कब कर रहा है, सितंबर में, क्योंकि आप ऑडिटर को डेटा दे रहे हो सितंबर में, क्योंकि अक्टूबर में रिटर्न फाइलिंग है, इसलिए आप सितंबर में दे रहे हो. सितंबर में आप कुछ तो साइन करते हो, ऑडिटर एक बना के देता है, बस आप ना ऑडिटर को सवाल पूछते हो कि एनुअल इसका क्या हुआ है, ईयर ओवर चेंज,
ये क्यों है? ऑडिटर बोलता है तो भगवान ने उसने किया है वो फाइनल है, बस हमको साइन करना है, दैट्स ऑल। ऐसे अगर आप कर रहे हो, बाद में नहीं, आपने बोला नहीं, why only auditor has to prepare financial, we want to prepare it daily, monthly, तो ये यहाँ पे आएगा। देन फाइनेंशियल्स आप रिव्यू कर रहे हो, मंथली बिजनेस रिव्यू डैशबोर्ड, बाकी बंदे लोग भी आपको डैशबोर्ड्स दिखा रहे हैं उनके उनके फंक्शंस के। देन यू आर सेइंग नो नो मोर मैच्योरिटीज में खाली बजट नहीं बना, रोलिंग फोरकास्ट बना रहा हूँ। देन you know, okay, now I'm not only doing rolling forecast, I'm doing a consolidated group wise status review। तो जब ये सब चीज हो रहा है तो डेफिनेटली आपकी मैच्योरिटी आ जाएगी इन द प्रोसेसेस। देन आपने करियर, आपका ग्रोथ पाथ बनाया है, ऐसे फाइनेंस को कहाँ पे लेके जाना है, एंड इसके बाद आपका वे फॉरवर्ड बन गया है, तो आप रेडी हो जंप करने के लिए, क्योंकि आपके पास पूरा वे फॉरवर्ड तैयार है। ये वे फॉरवर्ड को लेके आप हर मंथ रिव्यू कर रहे हो आपके परफॉर्मेंस का। एंड दिस इज माय लास्ट स्लाइड, एक 2 मिनट का वीडियो में प्ले करूंगा, देन आई एम डन। सो वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, एक्सेलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। एक सक्सेसफुल पर्सन है जॉर्ज वॉशिंगटन, इनका ये वीडियो है। इन्होंने लाइफ में पुअर कंडीशन से स्ट्रगल होके जो आज वो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है इनके, वो क्या करते हैं, कैसे किया है, एंड आपको लाइफ में अगर चेंज करना है एमएसएमई को तो क्या करना चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्पीच है, इसका एक जस्ट क्लिप है 2 मिनट का, आई एम जस्ट गोइंग टू प्ले देन आई एम डन। पंकज जी, आई विल बी रिक्वेस्टिंग यू, अगर वॉइस बराबर नहीं आ रहा है तो प्लीज। हाँ हाँ बताता हूँ मैं। I was flunking out of college. ओके, वॉइस इज ओके। I was flunking out of college. वॉइस इज ओके ना? I had a 1.7 grade point average. I hope none of you can relate.
I hope I completed my presentation in time. Thank you, everyone. Especially this being Sunday and that also holiday. Most of the kids are having holiday. You all decided that you will attend this session. I am really grateful. And thank you, Indradanu Academy and Pankajji. You are doing really great, making really impactful interventions to all the MSMEs. And I'm happy to partner with you in all initiatives henceforth. Thank you. Yes, thank you very much, Yogesh ji, for sparing your time. The same applies to you also. Today it is Sunday. Today it is Christmas Day, and you are in Goa. So Goa is something. Christmas and Goa, it is a unique combination. Right. हाँ हाँ हाँ। तो मैं चाहूंगा कि हमारे पार्टिसिपेंट्स में से कुछ लोगों से मैं बात करूं अभी। हमारे पुराने मित्र और सीए यश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो यश सर, आई एम अलाउिंग यू टू टॉक. You can talk and have your views. Good morning. Thank you, Pankaj. Very good morning, Yogesh sir, and Merry Christmas to all the participants of this wonderful morning session. In fact, everything was very good, and the top of the thing was the video that you have shared, Yogesh sir. Absolutely fantastic and fabulous video. Yogesh sir, I'll tell you one important thing about the practicing chartered accountants and the audiences of Nagpur or the accountants of Nagpur. This space is predominantly a traders hub, and there are so many MSMEs out here. And we do need this kind of outlook wherein we have to think beyond the perspective of a regular accountant or just a statutory compliance. We need to produce the accounts in such a way that those becomes useful for the user of the financial statements, that is to say the owners, the creditors, the bankers, and everybody. So your talk was very inspiring from all those perspective. The various dynamics that you've told about the business, the accounting, the professionalism, that is very much helpful for all of us. And I believe, and I look forward for having another session with eminent professional like you in the near future. Thank you very much. Yes, thank you यश. Now हमारे पुराने मित्र आनंद कटियार जी, इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आप को अनम्यूट करें और बात करें. ये प्योर बिजनेस ओनर है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है. इनकी बहुत सारी समस्या है. क्या वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. हाँ, यस आनंद जी, आप है? आनंद कटियार जी, शायद मेरी आवाज उन तक पहुंच नहीं रही है. इनका फूड सप्लाई का बिजनेस है. फूड मतलब अलग अलग तरह के रॉयल फूड सर्विसेज नाम से इनका बिजनेस है, और होटल इंडस्ट्री को ये बेसिकली फूड सप्लाई करते हैं. हाँ, वेरी गुड. यस उन तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है. एक मिनट, मैं यहाँ पे सुधीर उन्मेष नार्वेकर जी, यस हमारे ये भी पुराने मित्र है. उन्मेष जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट. उन्मेष जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं. यस, वन मोर, एक मिनट. गगन जी, आपके सवाल थे, मैं चाहूंगा कि आप भी अपना कुछ फीडबैक देना चाहे तो दे सकते हैं. गगन नील. Thanks for a very good session, and I felt it is the business sections what sir has talked. It is not only related to finance, but it is a way of life, and it applies to all the areas. And though he's covering in a finance, it's a great thing. But if you see in each and every activity what we do, either in a business or any profession, there is always chance of excelling in that. And it was a really good session. I'm also a professional in business excellence area, so I could really appreciate and connect with what points he was making. And I would like to be connected with him. I got this contact, so it will be a good partnership with like-minded people like us to really drive whole industry and a country in a
business excellence journey and will achieve a lot. That's my hope. Thanks. Okay. Gaganji, where are you from? I'm from Mumbai, so Mumbai. Okay. I got this link from some other group of the learning group, which is Okay. a HR professional. Though I'm not Okay. a HR professional, I am a member of that. They invited me. So it was a great experience and all the best. Thanks. Okay. And what do you do? I'm basically a IT professional Okay. and business excellence is my passion. Okay. Okay. Thank you very much for attending the session, and I hope you will continue attending our next sessions also. Yeah. So just keep on sending me because I got this invite with some other group. But if you can add me in this, I will like to really participate. Yes. Yes. Now onwards, you will be getting our invitation. Thanks a lot, Yes. Pankaj. Yes. And So thank you if very there, yes. So if there are any questions, Yogesh sir is here for a few more minutes also. And if there are no questions, we can end this session. But let me tell you one thing, that Yogesh sir has ignited something within us. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने हमारी भूख को जगा दिया है, क्योंकि ये विषय जो है ये बहुत बड़ा विषय है और हम इनको एक सेशन लेके छोड़ेंगे नहीं, एक बार और इनको हम तकलीफ देने वाले हैं फिर से, और एक बार फिर से बुलाएंगे जिसमें हम शायद और डीप में जाके इस बात को समझेंगे कि ये जो एनालिसिस वाला पार्ट है, स्कोर वाला पार्ट, कि स्कोरिंग कैसे करना है, मेजरमेंट कैसे करना है, ये हम इनसे डिटेल में सीखना चाहेंगे। क्योंकि आज का सेशन, एक सेशन में हमें स्टार्ट मिल गया, हमें एक नया डायमेंशन मिल गया, और इस डायमेंशन के साथ हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं और हमारा अल्टीमेटली जो फाइनेंशियल एक्सेलेंस वाला गोल है वहां तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, ये भी हम जरूर देखना चाहेंगे। So, Yogesh sir, shall we end the session? Yeah, if possible, I just want to take picture with all the participants. Agar possible hai, they can just quickly switch on the video for 1 second, and then we can. नहीं, वीडियो ऑन करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम ये वेबिनार फॉर्मेट में है, ये मीटिंग नहीं है। मीटिंग में सबके ऑन होते, यहाँ पे वेबिनार में सबके वीडियोस ऑन नहीं कर सकता, मतलब सिर्फ होस्ट का ही वीडियो ऑन हो सकता है। तो आपको मैंने कोर्स नहीं दिया। हाँ, तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, एक प्रिंट स्क्रीन करके यहाँ पे हम that's all. That will be स्क्रीनशॉट ले लें। Like carry the memory, like yes. holiday पे, you know, they all are attending, so I really appreciate everyone's effort. And yeah, enjoy a good time, Christmas time with your family, friends, and our bonding will improve with knowledge-based networking. That is what I always believe. Yes. And we are very keen छोटे उद्योगों को बड़ा करने के लिए. I am ready to join hands. So Pankaj ji, thank you for giving the platform and introducing me. Really grateful to you. Yes. Thank you very much. Have a nice day. Happy New Year and Merry Christmas to all of you. Yes. Thank you everyone. Okay. Yes. Bye.